శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
వానికి విచ్చేసిన భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయాం కళ్యాణాం నిధగే నిధగేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्री गोविंद 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 अत्यश्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे
కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠీ సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్యాం దేవదేవస్యాం భగవతో నారాయణస్యాం శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్యాం శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్యాం శేషాచల క్షేత్ర నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమం స్థైర్యం ధైర్యం విజయం అభయం ఆయురారోగ్యం ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థం కామ్యమోక్షం చతుర్విధ పురుషార్థం సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం సౌభాగ్యం సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్యం ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః పరిపూర్ణం అనుగ్రహం కృపాకటాక్షం వీక్షణం సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానసం భగవచ్ఛాస్త్రం ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் திருமலையிலிருந்து நேரடியாக ஒளிபரப்பும் மலையப்பனின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக காண வந்திருக்கும் பக்தர்களை இனிதே வரவேற்கிறது. ஸ்ரீ வைகுண்ட விரக்தாய சுவாமி புஷ்கரணி தட்டே ரமயா ரமமானாய வெங்கடேசாய மங்களம். அது என்ன, ஸ்ரீமன் நாராயணனுக்கு வைகுண்டத்திலே அவன் நித்தியவாசம் செய்யும் இடத்திலே இருந்து விரக்தி ஏற்பட்டது, அதாவது வெறுப்பு வரும் என்று அங்கே நித்திய சூரிகள் நித்திய முக்தர்கள் சூழ கொலுமண்டபத்திலே வீற்றிருக்கும் இவனுக்கு விரக்தி ஏற்படுகிறது என்றால் நித்திய சம்சாரிகளான பூலோகவாசிகளான நம்மை கண்டுதான். நாம் படும் துன்பங்களைக் கண்டு நம்மை ரட்சிக்க ஆசை கொண்டானாம். அதனாலே ஸ்ரீ வைகுண்ட போகங்களிலே விரக்தி அவனுக்கு ஏற்பட்டு ஏதோ ஒரு காரணத்தை முன்னிட்டு கொண்டு திருமகளை பிரிந்ததாலே இவ்விடத்திலே தோன்றினான். சுவாமி புஷ்கரணி தடே என்பது, அதாவது இந்த வராக க்ஷேத்திரத்தையும் அவன் தேர்ந்தெடுத்தாகிவிட்டது. கல்பத்திலே இப்பூமி பிராட்டிய இரண்யாற்றின் பிடியினின்று காப்பாற்ற கோல வராகமாக தோன்றினான். தாயாரும் உலகில் உள்ள ஜீவராசிகளுக்கு துன்பம் ஏற்படும் போது எவ்வாறு காப்பாற்றுவாய் என்று அவனிடத்தே கேட்க, வராக பெருமாளும்
தன்னை சரணடைந்தார்க்கு கைவிடேன் என்று இவளுக்கு சத்தியம் செய்து கொடுத்திருக்கிறானாம். அப்படிப்பட்ட லக்ஷ்மி வராகனின் க்ஷேத்திரம், ஆனந்தமயமான புஷ்ப மண்டபம். இது போராது என்று பக்கத்திலே மற்றொரு அவதாரமான நரசிம்மன் यस्य अभवत् भक्तजन हर्ति विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्नवं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम्। ओम भूः भूर्भुवस्वरों श्री भगवदाग्नया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदेः पुरुषोत्तमस्यां श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्यां शेषाचलक्षेत्रनिवासनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओं धारासु सप्तशुजमान शेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्तागुं शिशिरगुं सुशर्मां इदमापशिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूताः पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेथ्या मेथ्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः आपो वा इदगं सर्वं विश्वा भूतान्याप प्राणा वा आप पशव आपो मृतमापोन्नमापः सम्राडापो विराडापस्वराडापश्चन्दागुष्क्यापो ज्योतिगुष्क्यापो गजोगुष्क्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भवस्वराप ओम ओम येते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञिकापाशा वितताः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रस्वितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्पस्त्याम्। ओम वरुणमावाहयामि प्रथेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यानस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काष्किवमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः। वरुणाग्रमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुणोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु। ओमाग्नेयोगस्मात् त्यजामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितो न शम्भो वैरादन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रेषामधीशो व्यवधानामनादिः यामे हस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले। ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रवती जगासहित श्री विश्वक्सेनाग्नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाग्नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्नमः गुणोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु। भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तथे पदं समोढमस्य पाकं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि भस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरगः दिवीव चक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्यवोजाकृपागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं त्रविनोदात् त्रविनसस्तुरस्य त्रविनोदासनरस्य प्रियं सुते त्रविनोदा वीरवतीमिषन्नो त्रविनोदा रासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिशृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनोभिर्वियशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राचरसं तनूनां
पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तोः अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुरुवीतोपव्युषम् यदा वै सूर्य उदेतिम् अथ नक्षत्रं नगतिम् यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पुष्केत् तावत् कुरुवीत गत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः भूर्भुवस्वरं श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रभवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रभवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रभवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रभवन्तो कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो अप्रभवन्तो कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो अप्रभवन्तो कर्मणे स्वस्तिं ऋद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगिन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेम शरदः सवीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अप्रभवन्तो कर्मरुद्ध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रभवन्तो कर्मरुद्ध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रभवन्तो कर्मरुद्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयोपवस्थान ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षुषे योपश्रवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः वसतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षिगागजन्मथाम् आपो जनगथाचनः ओं हिरण्यवर्णाश्रुतिगप्पावकागासुजातः कश्यपोगास्मिन्द्रः अग्नीया गर्भं ददरे विरूपास्तान आपश्यग्स्यो न भवन्तो या सा कुम्राजा वरुणो ज्ञातिमध्ये सत्यानृते अवपश्यञ्जनानां मधुश्च्युतश्रुतियोगाप्पावकास्तान आपश्यग्स्यो न भवन्तो या सा देवादिवि कृण्वन्ति भक्षीया अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति याः पृथिवीं पयसोन्दन्ति शुक्रास्तान आपश्यग्स्यो न भवन्तो शिवेन मा चक्षुषा पश्कता पश्चिमगातनुभोपस्पृशतत्वचं मे सर्वागुम् अग्निगुं रप्सुषुदो हुवे वो मगिवर्चो बलमोजो निधत्तां यदधः सम्प्रगतिरः वनददाहते तस्मादानत्यो नामस्तथा वो नामानि सिन्धवः यत्प्रेषिता वरुणेन ता श्रीभगं समवल्गतां तदा आप्नोदिन्द्रो वो गतिस्तस्मादापो अनुस्थनाम् अपकामग्स्यन्दमाना अविवरतवोहिकाम् इन्द्रो वशक्तभर्तेवीस्तस्मात् वार्नामवोहितम् एको देवो अप्यतिष्ठत्स्यन्दमानागथावशम् उदानुशुर्महीर्ति तस्मादुतुकमुच्यते आपो भद्रा कृतमिदाप आसुरग्नि सोमोऽभिभ्रत्याप इत्ताः तीव्रो रसो मधुपृचामरङ्गम आमा प्राणेन सह वर्चसागन् आदित्वश्यां युतमा शृणोम्यामा घोषो गच्छति वाङ्न आसाम् मन्ये भेजानो अमृतस्य तर्हि हिरण्यवर्णा अतृमय्यदावः येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामगं हिरण्मगं तेन ब्रह्मविदो मगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीते सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मां जातवेदा मूर्तिगन्त्या पुनातु तच्छय्यो रावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपतगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु त्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशि देवार्त्विजो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशि मासा पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीच्यां दिश्याप ओषधिगो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामथोधराधरीर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्ति जन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशं
सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्यातमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुमथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च பக்கத்திலேயே அஹோபிலம் என்ற நரசிம்ம க்ஷேத்திரம் எஸ்ய அபவத் பக்தஜனஹார்த்திஹந்து பித்ருத்வம் அந்நேஷு விசாரிய தூர்ணம் ஸ்தம்பே அவதாரதம் அனன்யலப்யம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ நரசிம்மம் சரணம் பிரபத்தியே எந்தவித லாபத்தையும் எதிர்பாராது தன் பக்தனை காக்கும் பொருட்டு ஹிரண்யகசிபு வேண்டியவாறே பாதி மிருகம் பாதி மனிதனாக உருவெடுத்து அங்கே அப்பொழுதே தூணை உடைத்து கொண்டு தோன்றி பிரஹ்லாதனை ரட்சித்தான். ஆக இரு அவதார தசைகளுக்கு இடையே இரண்டுமே துன்பத்தில் உள்ளவர்களை காப்பாற்றும் குறிக்கோளாக கொண்டது. எனவே இந்த இடமே சரி என்று வந்து தோன்றினான். தேடி வரும் இவனை நம்மை போன்றோரை ரட்சிக்க இவ்விடத்திலே, அதாவது சுவாமி புஷ்கரணியின் கரையிலேயே தடத்திலேயே வந்து உதித்தான். மேலே வைகானச ஆகமப்படி அர்ச்சக சுவாமிகள் திருமண கைங்கரியங்களை செய்து துவங்குகிறார். त्वदीय भुक्तोज्झित சேஷபோஜினா त्वया निसृष्ट ஆத்மபரேணயத் யதா பிரியேண சேனாபதினா ஞவேதி தத்து ததானுஜானந்தம் உதாரவீக்ஷணைஹி என்கிறார் ஆளவந்தார். பெருமாளை மலையப்பனை பிரியமுடன் கவனித்து ரட்சித்து கொண்டிருக்கும், அதாவது எந்த விஷயம் எவ்வாறு செய்யப்பட வேண்டும் என்று பெருமானிடத்தே பார்வை கொண்டே சம்மதம் பெற்று மலையப்பனின் இசைவோடு காரியம் செய்யும் விஸ்வக்சேனருக்கு உபசாரங்கள். அதை தொடர்ந்து மங்கள திருமண காரியங்கள் நடந்தேற போகிறது. கண்டு அளிப்போம். நம் போன்றவர்கள் படும் துன்பத்தினின்று காப்பது இவன் குறிக்கோள் என்றேனா? ராமனாக அவதரித்த போது இதற்கு ஏதான உதாரணம் உண்டு என்றால், ராமனாக அவதரித்த போது இந்த குணம் நன்றாக வெளிப்பட்டது. பக்தர்களை ரட்சிப்பதில் ராமபிரான் திடமான வர்த்தமுடையவனாக திகழ்ந்தான். ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் ஆரண்ய காண்டத்திலே சீதையிடத்தே பெருமாள் சொன்ன மொழியாலே நாம் நன்றாக தெளியலாம். அப்யகம் ஜீவிதம் ஜஹ்யாம் துவாம் வா சீதே ச லக்ஷ்மணாம் நது பிரதிஜாம் சம்ஸ்ருத்ய பிராமணேபியோ விசேஷதா என்கிறான். இதன் பொருளாவது, சீதே, நான் என்னுடைய உயிரை விட்டாலும் விடுவேன், உன்னையும் இலக்குவனையும் விட்டாலும் விடுவேன், ஆனால் ஒருவரை காப்பாற்றுவேன் என்று உறுதி அளித்தேன் என்னால் அதை என்னால் மீற இயலாது, காப்பாற்றியே தீருவேன் என்று சரணாகத ரக்ஷன் பதிலளிக்கிறான். ராமபிரான் பக்தர்களை ரட்சிப்பதில் திடமான உறுதி படைத்தவன் என்று தெளிவாகிறது. அதை போன்றே இங்கே மலையப்பனின் திரு கல்யாண உற்சவத்தை சேவிக்க வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களும், தொலைக்காட்சி பெட்டி மூலமாக காண வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் தங்கள் குறை தீர நன்றாக அருளுவான் என்று நம்பிக்கை. எல்லாவற்றையும் விடுத்து அவன் அருளை ஒன்றையே எதிர்பார்த்து கோவிந்த நாம கோஷத்தோடு படியேறி வரும் பக்தர்களின் துன்பத்தை போக்காது விடமாட்டான், சத்தியமாக ரட்சிப்பான். மேலே இந்த திருக்கல்யாண உற்சவங்களின் கோலாகலங்களை கண்டுகளிப்போம். श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं रक्षासूत्रधारणार्थं रक्षाबन्धनपूजाञ्च करिष्ये। ओं शुचिवो हव्यामृतः शुचीनागुं शुचिगं हिनोम्यद्भरगं शुचिभ्यः ऋतेन सत्यमृतसाप आगञ्चु जन्मानः शुचयः पावकाः। ओं शन्नो निधत्तां तपसो जिहर्तां स्वयंवरग्रे मृतगे मृतागाम्। ओं शेषमावाहयामि, सहस्रीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। शेषाग्नमः इदमासनं शेषाग्नमः पात्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनं समर्पयामि, पुण्यपुष्पैः पूजयामि। शेषाग्नमः गुडोपहारं निवेदयामि, पानीयं समर्पयामि, ताम्बूलं समर्पयामि। शेषाग्नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु।
ఓం స్వస్తి నో మిమీతామశ్వినా భగ స్వస్తి దేవ్యదిరనర్వణః స్వస్తి పూషా అసురో దధాతున స్వస్తిత్యావా పృథివీ సుచేతునా స్వస్తగే వాయుమపప్రవామహై సోమం స్వస్తి భవనస్య గస్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తగే స్వస్తగ ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అత్యా స్వస్తగే వైశ్వానరో వసురగ్ని స్వస్తగే దేవా అవంతృభవ స్వస్తగే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వం హసః స్వస్తి మిత్రావరుణా స్వస్తి పథ్యే రేవతీం స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదితే కృథీం స్వస్తి బంధా మనుచరేమ సూర్యా చంద్రమసా వివాం పునర్తదతాఘ్నతా జానతా సంగమే మహీం స్వస్తిగనం తార్క్ష్యమరిష్టనేమిం మహద్భూతం వాగసం దేవతానాం అసురఘ్నమింద్రసఖం సమత్సు బృహత్యశో నావమివారుహేమాం అంహోముచమాంగిరసంగగంచ స్వస్త్యాత్రేయం మనసా చ తార్క్ష్యం ప్రగతపానిశరణం ప్రపత్యే స్వస్తి సంబాధేష్వభగన్నో అస్తు శుభగుం శుభం. மேலே பிரானுக்கும் பிராட்டிக்கும் கங்கண உற்சவம், கங்கணத்தை கட்டி கல்யாண பெண்ணாகவும் கல்யாண பிள்ளையாகவும் மாற்றும் அந்த சம்ஸ்காரங்கள் நடந்தேற போகிறது. இங்கே சுவாமி ஆளவந்தார் ஸ்தோத்திரரத்னம் என்றும் ஸ்லோகத் தொகுப்பில் இதை நன்றாக தெளிவுபடுத்துகிறார். இந்த பிரானும் பிராட்டியே நமக்கு எல்லா உறவாகவும் இருந்து நம்மை ரட்சிப்பான் என்பதை பிதாத்வம் மாதாத்வம் தயித தனயஸ்துவம் பிரிய சுகிருத் துவமேவத்வம் பந்துஹு குருரசி கதிஷ்சாசி ஜகதாம் त्वदीयः त्वद्भृद्यः தவ பரிஜனஸ்த்வத் கதிரகாம். இவ்வுலகம் அனைத்திலும் உள்ள ஜீவராசிகளுக்கு நீயே மாதா பிதா பிரியபுத்திரன் இனிய நண்பன் உறவு நல்வழிப்படுத்தும் ஆச்சாரியன் என்று எல்லாமாக இருக்கும். உன்னையே சரணாக அடைகின்றோம். சரணாக அடைந்த என்னை பாதுகாப்பதில் உரிமை உடையவனும் நீதான், சமர்த்தனும் நீதான். உனக்கே இது தகுந்தது, வேறு யாருக்கும் தகாத ஒன்று. உன்னிடத்தே சரணம் புகுந்தவரை அவர்களின் யோகக்ஷேமங்களை நீயே அனுகிரகிக்க வேணும் என்று பிரார்த்தித்தருளினார். நிர்பரோ நிர்பயோஸ்மி என்று கவலையின்றி இருக்கலாம். அவனது திருவடியிலே நம் பாரத்தை வைத்துவிட்டால் அதை நிவர்த்திக்கும் பொறுப்பு அவனுடையதே. நாம் பகவானுடைய சொத்து என்னும் உண்மை நிலையை புரிந்து கொண்டாலே போதுமானது. சூரியனை கண்ட பனிதுளிகள் போல துன்பங்கள் நம்மை விட்டு பறந்தோடும். தீனில் தூசாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய் என்கிறார் இதையே ஆண்டாள் நாச்சியார். நாம் அவனை விரும்ப வேணும், அவனும் நம்மை விரும்புவான், நம் மீது கண் வைப்பான், ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டான். இதுவே நிச்சயம். இந்த வேத மந்திர கோஷங்களாலே அர்ச்சக சுவாமியும் நம் பொருட்டு அவனிடத்தே வேண்டுவதும் ஈதே. பிரார்த்தனைக்கு இறங்கி நிச்சயமாக வருவான். இவனே பக்தரட்சகன். இவன் மறந்தாலும் இவனிடத்தே உள்ள தாயார் நிச்சயம் நம்மை விடமாட்டாள். இவர்களின் திருவடியான அந்த சடாரிக்கே அனைத்து சோடச உபசாரங்களும் நடத்தி அவனுடைய திருவடிகளுக்கு திருவடியே அவன் திண்கடலாய் இருக்கும்படியான இந்த திருவடிகளுக்கு சோடச உபசாரங்களும் நடாத்தி வைத்து நம்மை ரட்சிக்கும்படி அந்த அர்ச்சக சுவாமிகள் பிரார்த்தித்து, மேலே இந்த கல்யாண உற்சவத்தின் ஏற்றமும் அதை கண்டுகளிக்கும் நமக்கும் ஒரு ஏற்றம். மலையப்பன் நம்மை கைவிடான் என்னும் நம்பிக்கையே நம்மை காப்பாற்றும். இது திருவடி விடாது என்பது காகாசுரன் விருத்தாந்தத்திலே நாம் கண்டுகளிக்கலாம். ஒரு சமயம் சீதா பிராட்டியும் ராமபிரானும் ஏகாந்தத்தில் இருக்கும் பொழுது காகாசுரன் சீதாதேவியை தீண்ட அதை கண்ட ராமபிரானும் கொதித்தெழுந்து ஒரு தர்பையில் மந்திரத்தை உதித்து அதை தொடரச் செய்தான். காகாசுரனும் பயந்து அகில லோகங்களையும் சுற்றி வந்தாலும் யாராலும் அந்த தர்பதியை கங்கணத்தை கட்டி மணப்பிள்ளையாக மலையப்பனை ஆக்கப் போகிறார். காகாசுரனாலும் இருந்தும் அந்த தர்பையிடமிருந்து அந்த மந்திர தர்பையினின்று தப்பிக்க இயலாமல் மீண்டும் ராமபிரான் திருவடியிலே வந்து சேர்கிறான். அப்பொழுது வந்து விழுந்த பொழுது ராமபிரானின் திருவடியிலே தன் தலையை வைக்காது மறுபுறம் படுத்திருந்தான். சீதா பிராட்டி மனமிறங்கு அவன் தலையை திருப்பி ராமபிரானின் திருவடியிலே வைக்க
ராமபிரானும் இறங்கி அவனுடைய ஒரு கண் அந்த மந்திர உபதேசித்த அந்த தர்பையின் மரியாதை அளிக்க வேண்டும் மந்திரத்திற்கு. ஆகவே அவன் ஒருடைய கண்ணை மட்டும் எடுத்துவிட்டு மீண்டும் அந்த காக்காசுரனை காப்பாற்றி திருப்பி அனுப்புகிறார். இதோ ஸ்ரீதேவி பூதேவிக்கு கங்கணத்தை கட்டி அவர்களை மணப்பெண்களாக மாற்றுகிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இது ஷோடசோபச்சாரங்களோடு திருக்கல்யாணத்திற்கு இருவரும் தயாராகி விட்டார்கள். இந்த காக்காசுரன் விருத்தாந்தத்தை கொண்டு நாம் தெளியலாம். ஆனால் ராவணனோ சீதா பிராட்டியை சரணடையவில்லை. ஆகலா அவனுடைய தலை சாய்ந்தது. சரணம் அடைந்த காக்காசுரனை காப்பாற்றினாள். சரணம் அடையாத ராவணனை தலை கொய்தான் ராமன். எனவே இந்த திவ்ய தம்பதிகளின் திருவடிகளே நாம் சரண் அடைந்தால் எல்லா துன்பங்களும் பறந்தோடும். ரட்சிக்க நாம் பாத்திரபூதர்களாக ஆகும். ராவணன் தன்மன்யே ராகவம் வீரம் நாராயணம் அனாமயம் என்றான். ராமனை நான் நாராயணன் என்று நன்கு உணர்வேன். இதராளை வணங்காமல் இருப்பது என்னுடைய ஸ்வபாவம் என்றான். ராவணனுக்கு வணங்கல் அரக்கன் என்று பெயர் இருந்தாலும் ராவணனை வணங்காமல் இருந்தான். அதே அரக்கன் அந்த அரக்கனின் தம்பியான விபீஷணன் சர்வலோக சரண்யாய என்று ராமனை எனக்கு மட்டுமல்லாமல் சர்வலோகத்துக்கும் சரண்யன் என்றான். ராவணனின் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள்தான் ராமனை ஏகமாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணினார்கள். முதலில் சூர்பனகா என்று சொன்னாள். திருணௌ என்றாள். தஸ்மின் யுவாஸ்தே தஸ்மின் ராஜாஸ்தே புண்டரீககனம் தஸ்ய ஸ்வரூபம் திருணக என்றது கௌஷீதிகி உபனிஷத்து. நித்திய யுவாவாய் இளமை மிக்கவனாய் வைகுண்டத்தில் ஆதிசேஷ தல்பத்தில் பகவான் அமர்ந்திருக்கிறான் என்று கொண்டாடுகிறது. இங்கே ஆதிசேஷனான லக்ஷ்மணனையும் சேர்த்து திருணௌ என்று சொல்கிறது. ஆனால் மற்றொரு அவதாரமான கிருஷ்ண பரமாத்மா சங்கு சக்கர கதாபாணியாகவே பிறந்தான். ராமன் மண்டோதரிக்கு மாத்திரம் அப்படி காட்சி அளித்தானாம். ஆனால் இவன் தேவகிக்கு அவ்வாறு அவன் பிறந்தபோதே அவ்வாறாக காட்சி அளிக்கிறான். மண்டோதரி ராமனை பரமாத்மா என்று கொண்டாடுகிறாள். ராமாயணத்தில் வேறு எங்கேயும் பரமாத்மா என்ற பதம் கிடையாது. அவள் மண்டோதரி நன்றாக உணர்ந்தாள். தன் கணவன் ராவணன் செய்த தவறை உணர்ந்து பின்பு அந்த ராமனை துதித்தாள். மண்டோதரி மகா பதிவிரதை. அவளுடைய வாக்கில் இப்படி வருகிறது. ராமபிரானின் அவதார ரூபத்தை பார்த்து சொல்கிறாள் சுகுமாரோ என்று. எத் குமாரக தத் விதியோ மாரக என்கிறது வேதம். மாரக என்றால் மன்மதன், குமாரக என்றால் மன்மதனையும் பழிக்கும் ரூபமுடையவன் என்ற அர்த்தம். தர்பஹர சுந்தர திவ்யமூர்த்தி பகவான். கந்தர்பன் என்றால் மன்மதன். அவனுடைய கர்வத்தையும் அடக்கக்கூடிய ஏற்றமுடைய ரூபமுடையவன் பகவான். சுகுமாரோ என்றால் திவ்யமான ரூபமுடையவன் மட்டுமில்லாமல் நல்ல பலமும் பொருந்தியவன். மகாபலௌ. வேதத்தில் 4ஆம் காண்டத்தில் இந்த மாதிரி வாக்கியங்கள் உண்டாகின்றன. அனுஷ்டானம் எல்லாவற்றிலும் ஞானம் அனுஷ்டானம் உள்ளவர்கள் மட்டுமே அவனை நன்றாக உணர முடியும். புண்டரீக விசாலாட்சக தஸ்யதாகபியாசம் என்ற போன்ற வேதவாக்கங்கள் எம்பெருமானுடைய திருநேத்திரங்களை அகல விழித்த கண்களை நன்றாக விவரிக்கிறது. அதே அமலநாதி பிரானிலும் ஆழ்வார் நன்றாக எம்பெருமானின் திருக்கண்கள் நன்றாக பக்தர்களை நீடு நோக்காக நோக்கியவர்களின் துன்பத்தை அகல வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறார். அதற்காகவே அவன் புண்டரீக விசாலாட்சனாக திகழ்கிறான். பரியனாகி அந்த அரிய அமுணன் உடல் கீண்ட அமரர்க்கு அரிய ஆதிபிரான் அரங்கன் தம் அமலன் முகத்து கரியவாகி புடை பறந்து மிளிர்ந்து செவ்வரியோடி நீண்ட பெரியமாய கண்கள் என்னை பேதமை செய்தனவே என்கிறார் அமலநாதிபிரானில் ஆழ்வார். பகவானை பற்றிய உயர்ந்த விஷயம் ஒரு ராட்சசியின் வாக்கிலேயே வந்தது என்றால் சுவாத்விகர்களான ஆழ்வார்கள் வாக்கில் வராதா என்ன? வால்மீகி ராமாயணத்தில் சில இடங்களில் தான் பலஸ்ருதி உண்டு. பின்னால் சீதா பிராட்டி அக்னி பிரவேசம் பண்ணிய போது அங்கே தேவதைகள் எல்லாம் எழுந்தருளிந்தார்கள். ராமபிரானை ஸ்தோத்திரம் செய்து உன்னை நீ உணரவில்லையா ராமா என்று கேட்கிறார்கள். யுத்த காண்டத்தில் ஏதோன்விந்திரம் ஸ்தவாம் சுத்தம் சுத்தேன சாம்னாம் சுத்தைர்புத்தைர்வாவృద్ధ్వాం சுத்த ஆசீர்வான் மமத்வம் மகதேவாத்ரவிநமாகதும் தாம் மய்யாசீரஸ்து மகதேவஹோதிஹி தபூர்வேரிஷ்டாஸ்யாம தனுபாசுவீராः
माक्ययजन्तवमगानि हव्याकूतिः सत्यामनसो मे अस्तु येनो मानिकान् कथमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामे देवी ईश्वरवीरुणकृणोत विश्वे देवास इह वीरगत्वम् उत्थन्यमानमस्या अमेध्यमपपात्मानि यजमानस्यन्तु रेखा गायत्र्या प्रोक्ष्याम् जातवेदो भवनस्य रेत इह सिञ्च तपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहकुं शमी गर्भाच्चन कन्योमयो भूः देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आगप्रजागं मृगमस्मासुधे कितस्रोदीदिहिनो दुरोणीं कर्मणेवां देवेभ्यः शकेयम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वां सरस्वतेन मन्यस्वां देवसवितप्रसुवां तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमतस्वरुचो वेन आवह स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठास्ततश्चिगो नमसतश्च विवह ॐ ब्रह्माणमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि पितामहमावाहगामि हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमोधेनुगुं सोमो अरवन्तमाशुगुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदज्ञगुं सभेगं विदुश्रवणयो ददासु तस्मै ॐ सोममावाहगामि यज्ञाङ्गमावाहगामि इन्दुमावाहगामि चन्द्रमावाहगामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञे यजमानञ्चदैः ॐ प्रोक्षां पात्रादाधावमाधागां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उपाभ्याम् देवसवितप्रहरेम वीतके पोषाते ग्रन्थिं विष्कदम् आदित्यं व्यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वास्तृणामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसीं दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसीम् उत्तरतपदीच्यैर्गञ्जनमसि विष्णोस्तूपोऽसीं पश्चिमतः देवेभ्यो विष्णोस्तूपोऽसीं श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणितिपात्रियोः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामि सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचयच्छां प्रणगयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञे यजमानञ्चदैः ॐ प्रणयां कोपो गनक्तु सवो गनक्तु संविशन्तान् दैवीर्विषपात्राणि देवगित्यागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि वसूनावाहगामि मरुत आवाहगामि रुद्रानावाहगामि अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीमहाविष्णुमावाहगामि मित्रमावाहगामि वरुणमावाहगामि आदित्यानावाहगामि अश्विनमावाहगामि पूषणमावाहगामि कक्षमावाहगामि कक्षदेवत सोममावाहगामि औपासनेज्ञमावाहगामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामि सर्वदेवानावाहगामि आज्यपात्रे प्रजापतये जुष्टनिर्वभामि इन्द्राय जुष्टनिर्वभामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वभामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वभामि अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वभामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वभामि आज्यं द्रव्यदिष्टयामि चरं द्रव्यदिष्टयामि अग्नेर्ज्योतिरसीं समिधसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीम् अन्तरितगं रक्षोऽन्तरिता आराधकः प्रत्यष्टगं रक्ष प्रत्यष्ठा आराधकः चित्पति स्वापुना त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्त्वापुना त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः अनिरुद्धये नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः हुतवहाय नमः हुताशने नमः कृष्णवर्त्मने नमः देवमुखाय नमः सप्तजिह्वाय नमः वैश्वानराय नमः अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वमर्थस्वते थवर्थये चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवच्चसेनान्नात्येनां समेधय स्वाहा
वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेज्ञाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्याम् ॐ भूः स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा भोगं सुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृता आघारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्ये अतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधान दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवि वदक्षराददग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यबोधा कृपागं स्वस्समिन्धते विष्णोर्गत्परमं पदग्ग स्वाहा ॐ भूः स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा भोगं सुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిత్తురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొక్కలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరుందియరే పావడలు నందియరే గన్నల కాళాంజి దగ్గర బట్టలే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు
కతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరే కతితో బాగాలీయరే మొగరుడేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకేం భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధోభాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్దంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్తిలకావతి శోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమ నిరుతివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకా లోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురా సర్పిరదధి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తి మదృక్షవద్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యక రమణక కురు వర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షేం భరతఖండేం మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలేం లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపేం దండకారణ్యేం ప్రజాపతి క్షేత్రేం కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగేం మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగేం శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రేం వెంకటాచలేం మమ అనేక జన్మసు యః జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్థకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాదకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాగుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిత్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ విఖనో మునీంద్ర మతానుసారిభిః భృగ్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదితాం కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకీ నందక శార్ంగాది పంచాయుధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ప్రకారేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారుషేగ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ విభేదేన ప్రవర్తమానస్య పరతత్వ విభవ వ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నప్త్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారుషేగ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారుషేగ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమణిగణ విజృంభిత పాదార విందస్య అర్చావతార రూప భగవతః ప్రద్యుమ్నావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారుషేగ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయాం భక్తలోక పరిపాలనాయాం కిరీటహార కేయూరాం దివ్యాభరణభూషితాయాం
दिव्य कौस्तुभालङ्कृतायां दिव्य पीताम्बरधरायां दिव्यमाल्योभिशोभितायां प्रपन्न पारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुडवाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवनां स्वभावलावण्यतेजो रत्नाकरायाम् अखिल शाखात्यागिनोम् अखिल लोकपवित्रायां श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातायां श्री श्रीनिवासस्वामि परब्रह्मणे वरायाम् ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीं भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पंचारुषेग प्रवरान्वितां भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंदगुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जातां भृगो संकल्पदनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामीं ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीं काश्यप आवत्सारणीत्वमत्रगारुषेग प्रवरान्वितां काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामीम् कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणीर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाग सुमेधसें प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु இதோ மாங்கல்ய தாரணம் ஆக போகிறது. இந்தீவரன் உள்ளிட்ட தேவர் குழாங்களெல்லாம் வரவழைத்து இவர்கள் மணமகளின் குலங்கோத்திரங்களை தெரிவித்து அனைவர்களுடைய முன்னிலையிலே இதோ மாங்கல்ய தாரணம் நடக்கப் போகிறது. இந்த வதுவிற்கும் இந்த மணமகனுக்கும் நன்றாக திருமணம் நடக்க வேண்டும் என்று அனைத்து தேவர்களையும் இங்கே வரவழைத்தாகிவிட்டது. மங்கள காரியமாக இங்கே தொடரப் போகிறது. பகவான் ராவணனுக்கு ஏற்பட்ட நிலையே ஹிரண்யகசிபுக்கும் ஏற்பட்டது. பகவான் இருக்கிறான் என்று வேதம் நிர்தாரணம் பண்ணுகிறது. ஹிரண்யன் பகவானை துவேஷித்தானே ஒழிய பகவான் இல்லை என்று சொல்லவே இல்லை. ஆனால் பகவானுக்கு நிகராக அவனுக்கு மேலே தான் ஒரு படியாக இருக்க வேண்டும் என்று ஹிரண்யகசிபு நினைத்தான். பகவான் இருக்கிறான் என்று அவனுக்கு நன்றாக தெரியும். அவன் தம்பியான ஹிரண்யாட்சன் வராக அவதாரம் செய்து பகவான் கொன்றுவிட்டான் என்ற ஞானம் அவனுக்கு உண்டு. பகவானே இல்லை, தேவதைகளே இல்லை என்று அறிவு இருந்திருந்தால் அவன் பிரம்மாவை குறித்து 10,000 வருட காலம் நன்றாக தபஸ் பண்ணுவானா? பூரணமாக பகவானை இருப்பது அவனுக்கு நன்றாக தெரியும். பகவானுக்கு எந்தெந்த இடத்தில் பலம் இருக்கிறது என்று ஹிரண்யாட்சனுக்கு தெரியும். பகவான் என்னை காட்டிலும் மட்டமானவன், அவனை நான் அடிப்பேன் என்று சொன்னானே ஒழிய பகவானே இல்லை என்று இரண்யகசிபு சொல்லவே இல்லை. இருந்தாலும் அவன் கர்வத்தாலே அவன் அழிந்தான். உளன் எனில் உளன் என அவன் உருவம் இவ்வுருவகள், உளன் அலன் எனில் அவ்வுருவம் இவ்வுருவகள், உளனென இளனென இவை குணமுடமையில் உளன் இரு தகமையொடு ஒழிவிலன் பறந்தே என்கிறார் திருவாய்மொழியில் நம்மாழ்வார். இதில் ஆஸ்திகவாதம் நாஸ்திகவாதம் இரண்டையும் அழகாக சொல்கிறார். நாஸ்திகவாதம் என்பது ஆதியிலேயே இருந்திருக்கிறது. வேதத்தில் 3300 இடங்களில் நாஸ்திகவாதம் பண்ணப்படுகிறது. பகவான் இருக்கிறான் என்பதை ஆஸ்திகம் நேராக சொல்கிறது. ஏதோ ஒன்று இருப்பதனாலேதானே மற்றொருவர் அதை இல்லை என்று மறுதலித்து சொல்ல முடியும். நாஸ்திகமும் பகவானை இல்லை என்று சொல்லி அவன் இருப்பதையே சாதிக்கிறது. இல்லை இருப்பதை சாதிப்பது இல்லை என்று சொல்வதாலே தான் இருப்பது என்பது சாதிக்கிறது. எப்படி சொல்லப்படுகிறது என்பதை கவனிக்க வேண்டும். அது இது இல்லை, இது எப்படி அது இல்லை, அவன் இல்லை என்று ஒன்றை ஒத்துக்கொண்டு அதுபோல் அது இல்லை என்கிறோம்.
ஒத்துக்கொண்டால் தானே இல்லை என்று மறுதலித்து சொல்ல முடியும். அதே போல பகவான் இருப்பதை முதலில் ஒத்துக்கொண்டு பிறகு அதற்கு பின்னரே அதை இல்லை என்று மூதரிக்க வேண்டும். இல்லை என்பது சாஸ்திர ரீதியாக கிடையவே கிடையாது. பஞ்சு இருக்கிறது, பஞ்சின் அழிவு நூல், நூலின் அழிவு வஸ்திரம், வஸ்திரம் இன்னொரு வஸ்திரமாக பரிணமிக்கும். பானை இருக்கிறது, அதை அழித்தால் ஓட்டாஞ்சல்லி, பிறகு அணு பரமாணு என்று மாறுகிறது, தூள் தூளாக ஆகிறது. இவ்விடத்திலே அர்ச்சகப் பெருமான் எம்பெருமான் திருவடிகளுக்கு சமர்ப்பித்த சோடச உபசாரம் செய்து, அதாவது மணமகனுக்கு செய்து மேலே மணப்பிள்ளையாக அவனை மாற்றி திருமணத்திற்கு தயாராக்குகிறான். பரமாத்மா பிரளய காலத்தில் எல்லாவற்றின் சூக்ஷ்ம அம்சத்தையும் தன்னுள் அடக்கி காக்கின்றான். சிருஷ்டியில் வெளியே விடுகிறான். சூக்ஷ்மம் காரணம், ஸ்தூலம் காரியம். வேதம் சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் பகவான் இருப்பதை ஸ்தாபிக்கின்றன. அப்படி இருக்க பகவான் இல்லை என்று ஒருவன் நாஸ்திகவாதம் பண்ணுகிறான். எத்தனை விதமாக பரமாத்மா அவனுக்கு உபகாரம் பண்ணினாலும் இந்த வாதத்தை விடவே மாட்டேன் என்கிறான். தகாத பதார்த்தங்களை உண்கிறான். அப்படிப்பட்டவன் பரமாத்மாவின் திருவடியில் தன்னை அர்ப்பணித்து விட்டானேயாகில் ஒரு காலகட்டத்தில் அவனையும் பகவான் நல்லவன் என்றே ஏற்றுக்கொள்கிறான் என்கிறது. புண்ணியம் பண்ணவன் என்று பார்க்காமல் பகவானின் திருவடியில் தான் விழ வேண்டும். பாப்பம் மொத்தம் கழித்து கொண்டுத்தான் பரமாத்மாவிடம் போக வேண்டும் என்றால் எப்போது போவது? கடல் அலை எப்போது ஓய்வது? எப்பொழுது நம் சென்று ஸ்நானம் செய்வது என்று ஆகிவிடும். எப்போது ஸ்நானம் பண்ணுவது என்று ஆகிவிடும். பாப்பம் இருக்கட்டும், நீ போய் அவனிடம் திருவடியை பற்றினால் என்ன ஆகும்? நெல் செய்ய புல் தேயுமா போலே என்பார்கள் ஆச்சாரியர்கள். நெல் பயிரிட்டால் புல் தானாக அழியுமாம். அப்படி எம்பெருமானை பற்ற பாப்பங்கள் தானாக நம்மை விட்டு விலகிவிடும். பாபத்தை க்ஷாபனம் பண்ணி கொண்டுத்தான் அவரிடம் போக வேண்டும் என்ற நிர்பந்தமே இல்லை. பாப்பம் இருந்தால் இன்னும் விசேஷம். தாயார் மகாலட்சுமியே சொல்கிறாள், பாப்பானாம் வா சுபானாம் வா வதார்ஹானாம் பிளவங்கம காரியம் கருணமாரியேன ந கச்சின்ன அபராத்யதி. இது மகாலட்சுமி பேசிய பேச்சு. பகவானின் பேச்சை விட ஒரு படி மேலே ஓங்கி நிற்கிறது. பாப்பம் பண்ணியவர்கள் யாராக இருக்கட்டும், ஆனால் இந்த உலகினிலே பாப்பம் செய்யாதவர்கள் யார்? எந்த குழந்தை பாப்பம் செய்யாது? எந்த குழந்தை புண்ணியம் மட்டுமே செய்கிறது என்று ஒன்றும் இல்லை. புண்ணியம் பண்ணியவர்களாக இருக்கட்டுமே, காருண்யத்தோடு ஒருவரை ஆட்கொள்வதுதான் உயர்த்தி என்றாள். ஏனென்றால் உலகத்தில் பாபம் தப்பு பண்ணாதவர்களே இல்லை என்கிறாள். தப்பு பண்ணியதால் தானே பிறந்திருக்கிறோம். இல்லை என்றால் நமக்கு இந்த பூலோக வாசம் கிட்டுகிறாதே. எல்லோரும் தப்பு பண்ணக்கூடியவர்களே. தப்பை திருத்தி கொண்டாலே உயர்ந்த அதிகாரி. தப்பு பண்ணிவிட்டோம் என்று உட்கார்ந்து இருக்காது. பகவானின் திருவடியை ஸ்ரத்தையாக ஆசிரயித்தால் நாம் பண்ணிய தப்பை எல்லாம் மறந்து வந்தவன் யாராக இருந்தாலும் அனுகிரகம் பண்ணுவான் பரமாத்மா. இப்படித்தானே கடைசியில் எல்லா ஆயுதங்களையும் இழந்த ராவணனை நோக்கி இன்று போய் நாளை வா என்று சொல்லியது அவனை யோசிக்க ஒரு நாள் கூட கொடுத்தான். அப்படியும் செய்யாது தன் மமதையாலேயே ராவணன் தலையை இழந்தான் என்கிறது ராமாயணம். மேலே இவ்விடத்தில் அந்த திருமங்கல்யத்திற்கு செய்ய வேண்டிய சம்ஸ்காரங்களை செய்து இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி நம் பொருட்டு இந்த கல்யாணத்தை காண்பதால் நாம் எதற்காக வந்திருக்கிறோமோ ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு குறை உண்டு. அந்த எண்ணங்களை நிவர்த்திக்க அவனிடத்தை வேத மூல பிரமாணமாக பிரார்த்தித்து அனைவருக்கும் அனுகிரகிக்க வேண்டும். இங்கே வந்தால்தான் இல்லை, தொலைக்காட்சி மூலமாக கண்டு கொண்டிருக்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் அவர்களின் குறைகளை தீர்த்து நிறைவை தந்து மேலே கல்யாணங்கள், அதாவது மங்கள காரியங்கள் நடக்க நிறைவேற வரும் தை திங்களில் மங்களம் பொங்க எல்லோருக்கும் ஆசீர்வாதம் கிட்ட பகவானின் கருணை கிட்ட இதோ அர்ச்சக சுவாமி மேலே தொடர இருக்கிறார். தேவர்களாகவோ மனுஷர்களாகவோ பறவைகளாகவோ தாவரங்களாகவோ இருப்பவர்களில் ஜாதியினாலோ வடிவினாலோ அறிவினாலோ ஆற்றலினாலோ சுபாவத்தினாலோ உயர்ந்தவர்களாயினும் தாழ்ந்தவர்களாயினும் எல்லோரும் எனக்கு சமமே என்று எம்பெருமான் திருவடியை பற்றினார்க்கு எந்தவித குறையும் இல்லை என்கிறான். திருவடியை பற்ற வேண்டும், அது மட்டும்தான் அவனுக்கு. மேலே சம்ஸ்காரங்களை கண்டு நாம் மகிழ்வோம். இங்கே ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமசுருஜதாம் தந்திரயோ வேத அன்வசுத்யந்தாம் தானஹஸ்தே குருதாம் அத்தஹ சீதா சாவித்ரீம் மாங்கல்யம் தந்துனா நேனா லோகரக்ஷண ஹேதுனா கண்டே பத்னாமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம்
శ్రీదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి ప్రజాపతిः సోమగుం రాజానమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృత్యంతాం తాన్ హస్తే కురుతాం అతః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే వద్ధామి శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి మాంగళ్యధారణ ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు. శోభన పాడేము మేము, శోభన పాడేము మేము, సుదకులము ఈ భక్తులు మీకు చెల్లునిద్దరికీ నేలా. శోభన పాడేము మేము, సుదకులము ఈ భక్తులు మీకు చెల్లునిద్దరికీ నేలా. శోభన పాడేము మేము, శోభన పాడేము మేము. చూపుల నీవు పువ్వను సురతికి పెట్టితివి పూపనవ్వులు మించి పురవిడేలు. చూపుల నీవు పువ్వలు సురతికి పెట్టితివి పూపనవ్వులు మించి పురవిడేలు. ఈ భూమిని తప్పులని ఎదురు తెరా వేసితివి. ఈ భూమిని నవ్వులని ఎదురు తెరా వేసితివి. ఈ భక్తి పెండ్లాయను మీకిద్దరికీ నయ్యా. శోభన పాడేము మేము, సుదకులము ఈ భక్తులు మీకు చెల్లునిద్దరికీ నయ్యా. శోభన పాడేము మేము, శోభన పాడేము మేము. తరితీపు మాటలని కలబాలు పోసితివి కరిమసరసములే కంకణాలు. తరితీపు మాటలని తలబాలు పోసితివి కరిమసరసములే కంకణాలు. గురమైన వలపుల కొంగులు ముళ్ళు వేసితివి. గురమైన వలపుల కొంగులు ముళ్ళు వేసితివి. ఇరవాయ వేడుకలు ఇద్దరికీ నయ్యా. శోభన శక్వరీశ్చ స్వాహ దర్శశ్చ స్వాహ పూర్ణమాసశ్చ స్వాహ బృహచ్చ స్వాహ రథంతరంచ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహ అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవితప్రాసావీః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్కే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితప్రసువాం ఇమాన్ లాజానామిత్యభిగార్గ్యాం. ఇమాన్ లాజానావపామీం సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం
ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामीं समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्लूते क्नो लाजानावपन्तीं दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामीं समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्लूते क्नो लाजानावपन्तीं दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिरुहोष्केम् अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविधप्रसुवाम् ओम अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्ति पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गुच्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतक् स्वाहा तद्विप्रासो विमन्यवोजाकृवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदक् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्मसात्कुन्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्के अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविधप्रसुवाम् ओं यदस्य कर्मणोत्यरीरितं यत्वान्योनुमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहृतं करोतु स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहृतहुताहुतीनां कामानागं समर्थगित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगेन्नपदगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमपुष्मै स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतगे स्वाहा यन्म आत्मनो विन्दाभूदग्निस्तत्पुनराः आर्चातवेद वितर्षणि स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसरनिष्ठेभ्य स्वाहा भेषजं दुरिष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवेभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समिदसि तेजोऽसि तेजोमगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वागोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रिगानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वागतन्ति सप्तगो नीरापृणस्वा कृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तज्ञ स्वाहा वेदिर्भुक्तज्ञ स्वाहा द्यौर्भुक्तज्ञ स्वाहा पृथिवीभुक्तज्ञ स्वाहा अग्निर्जीर्णज्ञ स्वाहा वेदिर्जीर्णज्ञ स्वाहा द्यौर्जीर्णज्ञ स्वाहा पृथिवीजीर्णज्ञ स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णज्ञ स्वाहा ओम मृतधान विद्वाननष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आत्यशेषमिन्द्रागजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदिस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीस्तृप्यदो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः
देवसवितप्रासावीः आवाहित्यवताभ्योर्महागधास्कुमधास्तानं प्रवेशगामीं पवित्रमसि पवित्रं मे भोगात् स्वाहा अक्षितमक्षत्ये जहोमीम् अक्षितमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्कां दक्षिणागां प्रतीच्काम् उदीच्काम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः परिधिवपनगां दक्षिणतः परिधिवपनगाम् उत्तरतः परिधिवपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वानन्यान् परिसमोह्यां कूर्चाश्चेतिग्रन्थिं विसृज्याम् अपौपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोति आप्यागन्तामाप ओषधिगो मरुतां वृषधिगस्थदिवं गच्छतो नो वृष्टिमेरग स्वाहां शुद्ध्यन्तां देवसदनकुं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयागुषं जमदग्नेः कस्य पश्य त्रयागुषं यद्देवानां त्रयागुषं तन्मे अस्तु त्रयागुषं दीर्घायुत्वाया बलाया सुताया सुतं च वर्तसे त्रयागुषम् आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्ते दधातनां महेररागचक्षसें यो वश्वतमोरसस्तस्य भाजगते हनः वसुधीरिव मातरः तस्मा रङ्गमामवो यस्य क्षिगा गजन्वधाम् आपो जनगथा च नः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यत्थुदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुणोपहारं निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि आद्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीभूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु
கல்யாணத்திலே மாலை மாற்றும் இந்த கிளி நடைபெறப் போகிறது. அர்ச்சக சுவாமிகளுக்கும் மரியாதை. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు, బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నే
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ